Doosra Point, hosted by Boris and Mosif. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. And we're rolling, Mr. Pasha, from Sugar Fort, Skardu. स्कर्दू वाओ आई एम सरप्राइज कि हमारा कनेक्शन भी वर्क कर रहा है बट मैच देखा आपने फ्रॉम द हाइट्स ऑफ स्कर्दू पूरे फोर्ट को मैंने इधर उधर कर करा के अपना फाइनली इंटरनेट डिश तो आगे कुछ करके जब पहली पिक्चर्स आई हैं मैंने देखा कि शादाब ड्रॉप हो गया. आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट. आप उसी वक्त टीवी बंद कर देते हैं. मैं तो could not, like I said, मुझे तो शॉक में. I was like, how do you change a winning combination? जितनी भी ग्रीन पिच हो, ओवरकास्ट कंडीशंस हो, अगर आपके तीन मेन फास्ट बॉलर जो नहीं अचीव कर सकते, वो चौथा फास्ट बॉलर नहीं कर पाएगा. मेरी भी ये भी एक फिलॉसफी है कि अगर तीन फास्ट बॉलर वो नहीं कर पा रहे तो एक चौथे से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा. एंड वही हुआ. अफरीदी जो पिटता आ रहा है वही पिटा. ही गेव द मोमेंटम स्ट्रेट अप. यार कोई प्रेशर ही नहीं था दूसरे एंड से. आमिर वाज बॉलिंग ब्यूटीफुली बट लग रहा था ही वाज बॉलिंग ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट पिच. वो जब अफरीदी या हसन आते थे तो वो लगता था बिल्कुल कोई लाइन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं. पिच इट अप यार, पिच इट अप. कितना कहा. वही शॉट लेग साइड पे, कोई डिसिप्लिन ही नहीं था. एंड ऊपर से फिर शादाब भी नहीं था to control the middle innings. So I thought we almost, first 20 overs we had, pretty much lost all the advantage of winning the toss. I can tell you अगर हमने पहले बैटिंग की होती ना तो हम ये 200 के अंदर बाहर होते. हम वो जो स्टार्क स्टॉर्म होता ना पहले उस ग्रीन विकेट के ऊपर, I think it was the right decision to put them in, knowing our batting. लेकिन I think you when you drop Shadab, you drop part of your match already. To me, वो बाद में prove भी हो गया जब आप 25 रन से हारे हैं with Shadab's batting, you might have scored those runs. दूसरी बात ये जो आप कह रहे थे कि यार शाहीन शाफरी is kind of tested. It's not that he was coming in with a reputation और वो पिट गया. आपने उसको 5 मैचेस में पिटा ही है, तो आप तभी आपने वहाब रियाज को बुलाया, which was the right call. Exactly. तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि what is he thinking. It's okay if you lose. It was a close game. It was a good game overall. But the kind of decisions he made, I think Sarfraz really needs to talk to someone. I don't know, some senior who's there, Wasim Akram or Rabiz Raja, whoever should go and talk to him. He's making some stupid decisions starting from Afghanistan where he bowled Shadab in the 49th over, even though it was a warm-up game, but it shows the pattern of thinking. और कल शादाब को ड्रॉप करके was a horrible decision. For once, Ramesh Raja was right कि यार grass is cosmetic. Grass goes away. You can't just pick your side for 15 ओवर में ही आपको जरा से green tops ने दिखा दी तो आपने डर के अपनी टीम कॉम्बिनेशन ही तोड़ दिया. Yeah, exactly. तो मुझे वो भी समझ नहीं आया. और बेसिक्स भी थे गलत थे यार. मतलब आप बॉलिंग की एनालिसिस देखो तो वहाब रियाज who was bowling much better than Hassan Ali and Afridi actually only ended up bowling 8 overs. उसने अपना कोटा भी पूरा नहीं किया यार. I mean, आपने अफरीदी को जो पिट रहा है उसको पूरे 10 ओवर दे दिया और आपने वहाब को नहीं दिया जो who was actually looking कि he could have taken a wicket and he was bowling much better than the other two. So, I mean, even basics like that, yeah, drop catches or fielding, you expect us to drop a few catches, but Asif Ali का जो performance थी आज both with the bat and in the field was outrageously poor यार. कि मतलब एक तो हलवा कैच आपने क्रूशल हलवा कैच छोड़ा वो भी वहां की बॉलिंग में up front, तो उससे बड़ा गेम चेंजर था. फिंच obviously went on to score 80 and then डेविड वार्नर का भी आपने कैच छोड़ा वो भी हलवा. बट मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ये इसकी पोजीशन नहीं है. बाबर आजम इज द वन who actually is in the first slip usually for us now, but because शादाब नहीं था पॉइंट पे तो बाबर आजम को उन्होंने पॉइंट में डाला और आसिफ अली गया फर्स्ट स्लिप में. This is all another reason why you screwed it up by not picking up Shadab. So I almost blame even the catches dropped of directly to Shadab not being there because Shadab से आपकी फील्डिंग भी बेहतर होती है. एंड आपने पोजीशंस इधर उधर किए हैं तो आपके नेचुरल पोजीशंस भी नहीं रहे. बाबर आजम आपने बनाया है फर्स्ट स्लिप तो यू स्टिक विद दैट यार. यू कांट हैव पार्ट टाइमर्स. आई मीन स्लिप कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है यार. ये भी You raise an excellent point. कि टीम कॉम्बिनेशन दुनिया में कुछ बेसिक्स हैं उसके अंदर टीम कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ते जब तक कि कोई इंजरी ना हो, कोई और बहुत बड़ा कोई वेरिएबल ना आ जाए. तो आपने वो तोड़ के आप जो कह रहे हैं, आई वोंट रिपीट, all of that happened.
So to me, sir, कल जब हम हारे हैं, I hate to blame the captain, but yesterday I think to me Sarfraz lost the match. एक टीम कॉन्फिडेंस तोड़ना, उसके बाद पूरे ओवर्स पोल नहीं कराना वहां पे, ऐसे जब वो he was probably one of your best bowlers after Amir, और उसकी Yeah. तीसरी, और जिस तरह से मैच हारे कि आपको you shouldn't have taken that signal. You were 40 odd runs away. आपने आखिरी बॉल पे सिग्नल लिया, आपने शाहीन शाह अफरीदी को पूरे ओवर के लिए एक्सपोज कर दिया जब आप चेज कर रहे थे, उसके बाद आप एक स्टूपिड डेस्परेट रन लेते हुए आउट हो गए. यानी अगर आप इतने डेस्परेट थे to get to the striking end, why would you take a single and not face 6 balls without any वही risk? मैं कह रहा हूँ कि वो जो ऑन द स्पॉट थिंकिंग होती है, स्मार्टनेस होती है, गेम को आप जो रीड करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, बट अंडर प्रेशर वो नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो बड़े बड़े बेसिक से रह रहे थे. एंड फॉरगेट दैट, आई मीन लास्ट बॉल की उस वक्त तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी यार. लास्ट विकेट 40 रन कभी नहीं करती, तो आई थिंक सरफराज या कुछ भी कर लेता, आई डोंट थिंक वी वुड मेड 40 runs with 9 wickets down. So that's impossible. The wicket, I mean, first obviously bowling wasn't up to mark. उन्होंने, first 20 overs we lost our advantage because हमने bowling से नहीं की. Besides Amir, we looked ordinary, complete ordinary, काफी quite poor actually. But Amir, obviously 5 wickets. That's obviously great to see. और जो comeback किया second half innings में, एक वक्त तो मुझे लगता था 350 आराम से बनाता है ऑस्ट्रेलिया. So Oh actually, yes, oh yeah. to have them come back and actually only score 307 was a minor achievement. Although I would have said, okay, knowing the pitch conditions and stuff, I think we should have bowled them out under 300, to be honest. And not having Shadab again, fifth bowler का जो issue है with Hafiz and Shoaib, वो बहुत pitting है यार. 80 run तो कहीं कहीं नहीं गए आप with a fifth bowler like that. So you need, have a little bit more options, I think. उसमें both Imad and Shadab come into play because Shoaib Malik also now completely feels out of touch and out of form. Yeah, either Imad or Haris Sohail, one of these two has to come in. Yeah, and potentially both. I mean, अगर आसिफ अली को मैं एक और मैच देता हूँ, अगर आसिफ अली फिर नहीं परफॉर्म करता, तो maybe you do bring in हारिस सोहेल. सही है, वो कोई big hitter नहीं है, but मुझे all the matches that I've seen, besides obviously England, जो एक अलग ही लेवल पे खेलता है, लोग कोई 300 320 वाला स्कोर is a winning total. कोई मतलब कोई 350-400 रन नहीं हो रहे हैं. Because it's World Cup, there is a different kind of a pressure on teams now, so it's not going to be 380 chaseable kind of a scenario to me. Exactly. For hitting, that Hassan Ali and Bob Riaz are very capable hitters. I don't know how long you can rely on Asif Ali just because he can hit, a few out of the park. And you He certainly has can't. to deliver now. Yeah, exactly. And you certainly can't rely on his, fielding being like he performed today. Oh अगर man. Fielding इसी तरह की रही, तो मैं कहता हूँ कि वो जितने रन बना रहा है उतने तो उसने फील्डिंग में खो दिए हैं. तो by नहीं dropping बल्कि ज्यादा खो दिए. ज्यादा खो दिया. Exactly. ज्यादा खो दिए. तो वो जितने बनाएगा भी उससे वो इतने ज्यादा खो चुका होगा, तो फायदा क्या है? But I think at the end of the day 308, but जो भी wickets गिरी भी हैं, Babar looked so good. इतना आराम से खेल रहा था, and then a poor shot, top edge hook पे करते हुए, बिल्कुल ही unexpected out. Hafiz Imam, बिल्कुल settle लग रहा था, cruising 130 for 2 odd, कोई मसला ही नहीं, scoring at will, आराम से, कोई run rate का pressure भी नहीं, 6-6.5 का run rate था. It's not like run and ball a game. Run and ball today is nothing, yeah. Yeah. आराम से खेल रहे, then all of a sudden, collapse, and that was a big collapse. कि Finch 4 के full toss पे. हाँ, exactly. 4 विकेटें आपने 2 तो गिफ्ट किए हैं. एटलीस्ट इमाम वही अगेन लेग साइड पे आउट हुआ. हफीज ने गिफ्ट किए विकेट. हालांकि हफीज वाज प्लेइंग क्वाइट वेल और उसने मैक्सवेल को टारगेट किया. उसने he took targeted him, which we should have, and that was a good game plan. Yeah. But then Malik and Asif both had to score and they didn't do shit. I think Malik should definitely be benched next match. Zero doubt in my mind. Whether you bring in Imad or Haris, debatable. Haris will, by the way, also bowls a very decent off spinner, orthodox bowling. I've seen him bowl and he bowls decent.
So if you want to mix him up with Hafiz, he's not a bad option. He's in a great form. I don't know अगर वो form अब तक चली आपने उसको इतना बिठा दिया है. But one of them has to come in and Shoaib must be benched next match. Yeah, so I completely agree. I think I probably, because Imad can hit a bit, तो मेरे लिए, and he can bowl, probably, he's obviously can easily bowl 10 overs by himself. Maybe मेरे हिसाब से Imad gets a shoe in versus Haris, but you could go either way. But I think given the bowling options, but with Shadab coming back, I think bowling वैसी strengthened होती है. And you definitely you have to drop Shoaib for the next game. और next game अब मुझे जो analysis है, obviously with New Zealand, हमारा जो श्रीलंका से एक point हम खोए हैं, वो हमें बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है, because अब हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं, इंग्लैंड को हमने हरा दिया, लेकिन हम वेस्ट इंडीज से हार गए, तो वो एक सिर्फ प्लस माइनस हो गया मेरे हिसाब से. श्रीलंका का जो एक पॉइंट था वो we have to gain back somehow, which means now we have to either beat India, or India या New Zealand, जो मेरे ख्याल से New Zealand is the one that we're competing for the fourth position with now. South Africa looks out of sorts. And I can't see South Africa making the semifinals, given they've lost all the games, or एक washout भी हो गया अब उनका. So you really, and West Indies at the end of the day with the long run, I don't think they make it. उनकी one-off performances होंगी, yes, but I'm not sure they can have a sustained performance level to actually make the semis. So you're really talking about New Zealand and us to compete for the fourth innings. Now I'm not obviously discounting out Bangladesh and as well, but I still think we should be able to beat them to go ahead. But New Zealand का कल गेम इंडिया के साथ गेम होगा next, that be crucial. अगर New Zealand इंडिया या किसी बड़ी टीम को हरा दिया, then it actually becomes out of our equation. Maybe even if we win out, then New Zealand might make through. So now it's really getting to a critical situation कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची. So let's do a scenario planning. You're saying if New Zealand beats India, they have a better chance than us, even if you win all our matches? Because मेरी points पे इतनी नजर नहीं है इस वक्त. हाँ, because they haven't lost ना, तो उन्होंने 3-3 है, तो वो श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा चुके हैं. श्रीलंका से तो हम वैसे ही एक पॉइंट सिर्फ लिया है, तो they have an advantage by 1 point as it is. उसके on top of that we've lost to West Indies. And we cover, अगर वो इंडिया को हराते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाते हैं, तो हम पे बराबर होते हैं, but we still less because of the 1 point in Sri Lanka. Then it becomes a head to head. पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में कौन जीतता है? I makes sense. I think, but you have to beat India now. हमें लगता है कि हम शायद ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, इंडिया से हारेंगे, all those things. You lost to West Indies, then you had to beat England. You beat England. You lost to Australia, and now you have to beat India. आपको वैसे एक point श्रीलंका में जा चुका है. हम ऑस्ट्रेलिया से हार सकते थे had we not lost a point against Sri Lanka. Exactly, yeah. And plus, you never know. Rain again might poop in your party. Yeah, you can never count that out. Yeah, English conditions हैं, तो वो तो कभी भी हो सकता. So it's very simple. Listen, after you beat England, I back ourselves to beat anyone. We almost beat Australia. So you have to win every match from here, because you never know. You're relying on a match against Afghanistan and Bangladesh, and that match might just get washed out completely. Yeah, so but you can't leave it to अगर आपको अपने, you got to keep your fate in your own hands वाली बात है. If you want to do that, then you have to win. Of course, it's very clear. So, but permutation, so for me, you're in a crunch situation. Yeah, permutation calculations with मेरे हिसाब से, I think you still probably can still lose one more game and still make it easily, or not easily, but you can lose one more game and then still make it. But then वो permutations or calculations पे आ जाएगा, and I think the New Zealand game for us becomes critical. But again, let's see. I mean, New Zealand still has to play, England still has to play India, and उनके जो बड़े matches अब आएंगे, तो वो पता चल जाएगा. If they also lose against all of them, that helps us, because it becomes a sort of, us against New Zealand effectively. But अभी भी
we're almost not even halfway through the tournament, so abhi काफी cricket बाकी है. But you're starting to get clear distinction hai कि England and India definitely are your two semi-finalists. Australia, I would say, is a shoe-in already. So it's really down to one position, one Yeah. semi-finalist. So in a strange way, are you rooting for India to beat New Zealand? Yes, as much as that. I would. Yeah, I think that's what we need to do. और कोई option ही नहीं है. To bring them to our level. दिल पे पत्थर रख के कल हम कोहली को support करेंगे. That's where I'm gravitating towards. Yeah, यही होना चाहिए कि so that you have a contest going on with New Zealand. ठीक Yeah, है. I think. So तो देखें क्या होता है, but आज तो काफी, it was poor. It was a good game in the end. It was a close game of sorts. I mean, Charlie Sun is still a decent run rate हमारा तो वैसे ही बिल्कुल ही मतलब points का सीन, run rate का तो कोई सीन ही नहीं बचा हमारा. तो I think overall quite disappointing. Planning out थी, batting में थोड़ा panic था. We could have easily won this game, so it was quite disappointing to not have come through. Having won the toss and stuff, I think we could have done a better job. yeah, my eternal optimism is telling me I'm not dejected the way I was dejected after West Indies match. There were a lot of positives coming out for us in the last match. I think I'm disappointed strategically. We lost that match, but we came quite close. So अभी भी उम्मीद काफी है. जिस तरह से खेल रहे हैं, it's a great sign that Amir is now back to me. I think he was bringing the ball back into me. हमेशा से कह रहा हूँ. So there are a lot of positives coming out for you. I think if I was surprised, I would just focus on those and learn from my mistakes. And there were some big mistakes that he needs to recover from. No, I agree. Charlie, you should enjoy the rest of your trip up north. It looks gorgeous out there. So For our audience, that's which fort is it? Serena pe ho na? Sugar Fort. Serena Fort. Sugar, awesome place. Whoever can come here, get here. You won't get any internet. So all right, be prepared. We'll catch up, I'm sure, All right, sir. when post Pakistan versus India. But as always, Pakistan Zindabad. Inshallah, next match jeetenge. And I'm all geared up. I'll be in Karachi then. I'll got all my shirts made. तो पहन के मैं तैयार हूँ Sunday morning के लिए. Let's see क्या होता है. I'll see you then. All Can't right, wait. Can't wait. All right, All right, thanks. man. Take care. Bye. Bye. Doosra Point. Hosted by Paris and Mosif.